Yes, good afternoon, student. Welcome to the English class. Today we are going to start a new topic of English grammar, that is prepositions. So we will discuss a different type of prepositions, as a preposition of place, as a preposition of time, as a preposition of direction and movement. So let's start our topic, preposition. So student, before starting this topic, you have to know that the preposition, it is pronounced as a preposition. Preposition, it is an active word. As a, when we divide these two words as a plus positions, okay, position से पहले, when we talk in this video that what is a prepositions, first of all you have to know that what is a preposition. Preposition is a word that shows the relation between a noun or pronoun and other words in a sentence. So student, what is a preposition? Preposition एक word होता है, वो show करता है relationship इसके बीच में, as a noun भी हो सकती है और pronoun भी हो सकता है, ये sentence के अंदर कई other words भी हो सकते हैं. So we can say that preposition is a word that used to link a word. किसी word को link करने का मतलब that is a noun or pronoun with other word in a sentence. Okay students, so link here means link का मतलब या relationship का मतलब यहाँ कहते हैं to provide the relationship between noun and pronoun and other words in any sentence. So thus we may say that the sentence is complete. तो हम कह सकते हैं कि sentence क्या है, complete है. Okay students, so now you notice that here and giving you an example, the cat is sitting under the table. Okay, so here under is used to link the table, which is noun sitting placement of a cat. यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर, तब आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा आपको कि इस सेंटेंस के अंदर जो लिंकिंग वर्ड है ऐसे क्या है, अंडर. ओके, हियर यू यूज अंडर टू लिंक, to use link the table, and which is a noun. Table क्या है, as a noun है, and noun sitting the placement of a cat. Here we talk about a cat. जो हमको रिलेशनशिप पता चलता है कि cat और टेबल के बीच में क्या सिटिंग है, क्या सिटिंग हो रही है, अंडर अ टेबल. क्या है, टेबल के अंडर है. If you do not use under, okay students, listen to me carefully. If you do not use under in the sentence, we are not able to get what the relationship between the sitting cat and the table. Okay, so using under, we are confirmed that cat is sitting under the table. Here the under is a preposition. Under क्या है यहाँ पे, as a preposition है. So I told you before that the preposition make a two word. So preposition, जब भी हम किसी position की बात करते हैं, पहले हम use करते हैं उसको क्या बोलेंगे, preposition. So now let's look in this time. So here there are three types of prepositions. Okay, so first is here as a preposition of place, as a preposition of time, as a preposition of direction. Okay, so where someone or something is, जब हम किसी की बात कर रहे हैं कि कोई कहाँ पर है, किस जगह है, we use as a preposition of place. For example, as we use at, on, it. Okay, and next is here preposition of time. So where an event happen or happen, happens or happen, जो भी event कोई happen हो रही है, ये घटित हो रही है, उसके लिए हम कौन सा preposition use करेंगे, as a preposition of time. So example of the preposition of time as a at, on, it, we use as at, on, it, for, since, by, until as a preposition of time. In the next preposition of direction. So in which someone or something comes or goes, जो चीज आती है, जो चीज चली जाती है, when we use we talk about a direction. So for example, as we use up, down, over, towards, when we speak a sentence, when we write a sentence, so you generally notice that we use as a different types of preposition, as a preposition of place, preposition of time, and preposition of direction. So students, let's start. We will discuss one by one in this video. The first is here preposition of place. Now student, what is a preposition of place? A preposition of place is a word which helps to describe where something or somebody is. Okay, a preposition of place describe the location of something. हमको क्या पता चल रहा है, क्या है उसकी location, क्या है वो कहाँ पर है. Okay, so at, on and in as a preposition of place. जो at, in और and वो क्या है, preposition of place है. Which show, क्या show करते हैं, the position of people, place
प्लेस और थिंग, वो शो करते हैं पीपल की जो पोजीशन होती है, किसकी, पीपल की, प्लेसेस की और थिंग्स की। सो एट इंडिकेट्स एट अ पॉइंट, और एट किसके लिए यूज करते हैं, हम एज ए पॉइंट के लिए यूज करते हैं, यस। एंड ऑन एज अ लाइन सरफेस, जब कोई लाइन सरफेस आती है वी यूज ऑन preposition, एंड इन इंडिकेट्स एन एरिया और वॉल्यूम, और इन किसके लिए इंडिकेट करता है, किसी भी एरिया और वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हम कौन सा preposition यूज करेंगे, as a in. So one by one we will discuss. First is here at preposition. So where we use at prepositions here, the correct formation of a at prepositions at the place, at the cinema. देखो here at, फिर the and cinema, here place the name of cinema, as we use at the school. Okay, हम जब हम school की use करेंगे तो we use at. Okay, so look into the example. Number one is here, she was at the cinema. Okay, I was at school. So here you notice that she was at the cinema. Here at is a preposition to relationship, tell us the relationship between the noun as a pronoun or a noun. Okay, ये हमको preposition हमको ये show कर रहा है कि at किसके साथ use होता है, is a place के place में हम preposition place में हम at use करते हैं, और किसके लिए use कर रहे हैं at, जब भी हम सिनेमा के बारे में बात करेंगे, स्कूल के बारे में बात करेंगे तो हम कौन सा preposition use करेंगे, at. So now where another use of at preposition, at first specific place, जब हम specific place की बात करते हैं as a New Delhi, as a Grand Hotel, as a railway station, so we use at preposition. Here look at the example, I stay at the Grand Hotel. Okay, so you notice that here we use at the Grand Hotel. Okay, so now another example of at, as where we use at plus specific address at a 10 मॉडल नाउन. ओके, जब स्पेसिफिक एड्रेस जब हम यूज करते हैं, जब भी हमको पता है कि स्पेसिफिक एड्रेस जब हम किसी को बता रहे हैं, सो वी यूज एट preposition. ओके, ही लिव्स एट 9 मॉडल टाउन, जब ये preposition क्या है, एज स्पेसिफिक एड्रेस है तो वी यूज एट. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एट preposition हमने कहां पर एट preposition यूज किया था, लेट्स रिवाइज वंस अगेन. एट द प्लेस, जब हम किसी प्लेस के बारे में, एट सिनेमा, एट किसी स्कूल के बारे में बात करें, वी यूज एट preposition. एंड स्पेसिफिक प्लेस की जब हम बात करते हैं, रेलवे स्टेशन एट न्यू दिल्ली, ओके, तो वी यूज एट preposition, एंड स्पेसिफिक एड्रेस वी यूज एट preposition. ओके, नाउ मूव ऑन द ऑन. So on indicates a line or surface in sphere. The place is thought of in terms of length but not breadth or depth. जब भी हम किसी on preposition की बात करते हैं कि उस लेवल की, उस सरफेस की हम बात करते हैं, जो जब हम उसकी लेंथ की बट नॉट ब्रीथ और डेप्थ, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, डेप्थ मतलब गहराई नहीं होनी चाहिए, केवल ऊपरी सतह की हम जब बात करते हैं. सो लुक इन द एग्जांपल स्टूडेंट्स, द बुक इज ऑन द टेबल. हियर देयर इज नो शो द depth and the breadth of the table. Here we show the surface. Okay, here we show the line and the surface. Okay, so the book is on the table. We use on preposition here. So now where we use another use of on preposition, on plus part of words. Parts हमारी जो body के जो भी parts हैं उसके लिए हम कौन सा preposition use करेंगे, on the foot, on our heads. Okay, so let's understand from the example. He put the bundle on his head. So उसने अपने head के ऊपर bundle रखा. So here we use as a on preposition because very well on is used for as a parts of body, as a on the foot, on our heads. Okay, we use on preposition. So now next one is here on. Here another uses of on preposition, on plus type of transport. Transport जब सामान हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, तो उसके लिए हम कौन सा preposition use करेंगे, on, as a on horse, on bicycle, on train. So let's understand from the example. He rode on his horse. So वो जो रोड कर रहा है, right, की सेकंड फॉर्म है रोड, ऑन हिज किस पे कर रहा है, ऑन हिज horse. He was on the train to Delhi. वो क्या है, and we use on preposition. Why we use it? Because it is the medium of a transport. Here we use as a on the train. Okay, now also use on when we talk about a place as a line. जब हम किसी place की as a line की बात कर रहे हैं, वहां पर on preposition कैसे यूज करते हैं, let's understand. The house is on the main road. Here you notice that main road, जब हम बात करते हैं main road पूरी एक बिल्कुल सीधी straight road जा रही है, तो we use as a talk about a place. Okay, जब हम as a line, जब line की बात करें we use on preposition. Varanasi is on the Ganga river. So you notice that
that here वाराणसी जब हम गंगा नदी भी जो हम एज ए लाइन मतलब वो क्या कर रही है, बह रही है, एक ही लाइन में बह रही है. जब हम रोड की बात करें गंगा रिवर जब सीधी स्ट्रेट जा रही है एज ए लाइन के लिए वी यूज ऑन preposition. Okay student, and if you have understood the at or on preposition, so let's start the in preposition. Where we use in preposition, in indicates areas usually a ground or place and enclosed by boundaries. in जब हम indicate करते हैं एरिया के ऐसे हम जब बात करते हैं ग्राउंड की प्लेस की जो enclosed किससे होता है, बाउंड्रीज से होता है. and the volume that is thought of terms of land breadth and height or depth. जो जब हम इसकी बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम, एज ए लेंथ की, ब्रीथ और हाइट की, डेप्थ की जो हम बात करते हैं we use in preposition. Okay, so next is our in plus name, where we use another uses of in preposition. In plus name of countries and cities as India, England, France, Delhi and Mumbai. So he lives in India. वो कहाँ पर रहती है, इंडिया में. हम किसकी बात करते हैं, कंट्रीज की. yes, she had lived in England. Here we use also a user country, so here we use as a in preposition in the sentence. She had lived in England for 5 years. Okay student, now नेक्स्ट यूजेस ऑफ इन. सो इन प्लस रेजिडेंस मतलब रेजिडेंस जब का रहने की जगह एज ए हाउस, एज इन अ बंगलो, इन अ पैलेस, इन अ फ्लैट. जब भी हम बात करते हैं हाउसेस की, बंगलो की, वी यूज इन preposition. So here I would like to live in a bungalow. Here before the bungalow we use in preposition. The king lives in a palace. So here we use as a before the palace we use in preposition. Okay, so now in plus place of work, in a bank, in a factory, in a firm. Okay student, so we use in preposition. For example, my neighbor works in a factory. So मेरा जो पड़ोसी है काम करता है फैक्ट्री में. So here we use in preposition as a place of work. जहाँ पर वो जगह जहाँ काम करते हैं, in a bank है, जैसे फैक्ट्री है, as a firm है, we use in preposition before this place of work. Okay, so now next is the example. His father works in a bank. Bank में क्या है, काम करने की जगह. We use in preposition. Okay. Another uses of in preposition. Yes, in plus room and places. In किसके साथ use कर रहे हैं, room और places. जैसे for example in the kitchen, in the room, in the bathroom. Okay, we use a in preposition. She has been in the kitchen for half an hour. So you notice that in the kitchen, if we talk about the place of kitchen, so we use in preposition before the kitchen. The boys are in the room. Boys कहाँ पर है, room में है. तो हम किस place की, किसी place की बात कर रहे हैं, room में है. तो उससे पहले हमने कौन सा preposition use किया है, in preposition. So let's start the exercise depend on a preposition of place. Okay. Number 1 is here. She kept her clothes dash in almirah. जब हम किसी की बात कर रहे हैं उसके अपने अलमीरा में अपने क्लोथ रखती है ना. So we use in preposition. They saw some marks on the ceiling. जब ceiling के ऊपर हम देख रहे हैं कुछ marks, we use on preposition. His brother works dash in. जब अभी भी हमने बात की थी, जब हम place of work की बात करते हैं तो we use in preposition. Yes, her elder sister lives. जब हम किसी एड्रेस की, पर्टिकुलर एड्रेस की बात करते हैं तो we use at preposition. Here we use at preposition as a her elder sister lives at 8 Mission Road. Now next sentence is here. The girls are in the room. You notice that when we talk about a place we use in preposition. Okay student, I hope you have to understood the first category of a preposition as a preposition of place. So here we understand at preposition, in preposition or on preposition. Okay, so now we'll move on the preposition of time. Okay students, where we use as a preposition of time, so let's understand. Student, the preposition of time allows you to discuss a specific time. जब हम preposition of time की बात करते हैं तो ये क्या allow करता है, to discuss a specific time period such as the date on the calendar, on the days of the week or the actual time something takes place. Takes place. So now the students, you notice that in the category of the preposition of time, जब हम किसकी बात करते हैं, specific हम time period की बात कर रहे हैं, as a calendar की, अब month of days की, weeks की बात कर रहे हैं, तो we use as a preposition of time. So here the example of the preposition, which preposition used in that preposition of time as a at, in or
on. So you notice that then when we talk about the preposition of place, we also use at, in, or. जब आप बच्चे, जब आपको ये समझ आएगा कि जब हम preposition of place की बात करते हैं तभी भी हम at, on और in ही preposition यूज कर रहे हैं. क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो यूजेज है वो डिफरेंट डिफरेंट है प्लेसेस के लिए. जब हम टाइम की बात करेंगे तभी भी इनका यूजेज क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा. सो हियर, सो वी यूज एट. जब हम एट की बात करें, वी यूज जब हम टाइम यूज करते हैं तो वी यूज एट preposition. एज ए डेज की हम when we talk about a days we use on preposition, and we use talk about in we use as a month. जब हम preposition month और years की बात करते हैं we use on preposition, sorry, in a preposition. So the now the student, some trick is here. So I'm showing you that the जब भी हम बात करते हैं in, on और at, you notice the sign is here. जब हम बात करते हैं in से बड़ा क्या है? on से बड़ा क्या है? at. So here in, जब हम month और year से बिगर क्या है? जब हम month और year से हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? डेज की. यस, उससे बड़ा क्या है? एज अ टाइम. जब हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? टाइम की बात करते हैं तो we use at preposition. Here this is a trick, we use a at preposition. Okay student, I hope you have to understood. Now student, let's start the category of preposition of time. Okay, so at is used for point of time. Where we use at? Is used for a point of time. Okay student, underline this. Yes, at plus, where we use at preposition, at plus particular. जब हम particular time की बात करते हैं we use at preposition as a dawn, midday, noon, night. Okay student, so midday. So I'm giving an example. I met him at 11:40 o'clock. जब मैं उससे कब मिला? एज ए टाइम डिस्कस कर रखा है यहाँ पे, टाइम दे रखा है तो वी यूज एट preposition. She returns at noon. जब हम noon की भी बात कर रहे हैं तो we use at preposition, as if this is a preposition of time. So here another uses of at preposition, at plus the plus a particular time in a week, month and year. So you notice that at the start, at the end of the day, month, year, we use at preposition. जब भी हम किसी week की, किसी month की, किसी year की बात करते हैं तो हम at preposition use करते हैं. Now another main thing is here that at the start, जब हम use करते हैं at the start, and when we speak, when we write the sentence at the end of the week, as we talk about the month, we talk about the year, and we can use a at preposition. Okay, let's understand from the example. We are going there at the end of the week. You notice that here in the sentence, the end of the week. So here you to use a preposition at. Now in the second sentence, she left school at the start of the month. Here you notice that at the start of the month, you notice here we use a at preposition. Okay student, so now another uses of at preposition is at plus festival. As you know very well, festival in Tuhar, as a Christmas, at New Year, at Easter, at Diwali, etc. So you use at preposition with the festival. So look at the example. They had a holiday at Diwali. So here we talk about the name of a festival. As here we write at Diwali, so we use at preposition before the Diwali. So in the second sentence, he visited his friend at Christmas. Here we also talk about the festival. So here we use a at preposition. Okay student. Now next one is here at meal. So here notice that at we use at preposition with meal के साथ हम क्या use कर रहे हैं? At preposition, at the breakfast, at lunch, at tea, at a dinner. Okay, so now looking at the example here students. Here they met each other at dinner. वो किससे, वो एक दूसरे से कहाँ पर मिले? At a dinner. We use at preposition. All the friends were present at lunch. We talk about a lunch, so we use a at preposition before the meal. Okay, so now, okay, I hope you have understood the at preposition. Now let's start the in preposition. Here we use in preposition for preposition of time. Okay, so in is generally used for a period of time to show the time frame, period of time. Okay, so where we use in preposition, कहाँ पर यूज करते हैं? जब हम किसी पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करते हैं, उस टाइम फ्रेम को जब हमको शो करना होता है. ओके, वेयर वी यूज अ इन preposition. So let's start. So in plus the plus part of a day. Part क्या है? दिन के जो part होते हैं, in the evening, in the morning, है ना? So we use a in preposition. For example, I go for a walk in the morning. You notice that we use in the morning. We use in as a
preposition before the morning. So she went to the market in the evening. So here we talk about the part of the evening. So we use in preposition before the evening. So now next another uses of in preposition. In plus month, year, in March, in June, in 1984. Notice in 1984 जब हम ईयर की भी बात करते हैं, जब हम मंथ की भी बात करते हैं, we use in preposition. For example, as my sister was born in 1988. So notice that here we talk about a year. So here we use in preposition before the year. Okay. So now another uses of in. Yes, in the seasons of years, a specific century in summer, in winter, in the 20th century. So here student you notice that the जब हम years के जब seasons की बात करते हैं, जैसे summer की, जैसे winter की, हम जब बात करते हैं, जैसे spring की बात करेंगे, तो we use in preposition before this season. So another uses of in preposition we use before the specific century. जब हम specific century की हम बात करते हैं, as a 20th century, the 19th century we use in preposition. So let's understand from the example. He goes to Shimla in summer. Okay, so हम किसकी बात कर रहे हैं? As a summer की बात कर रहे हैं, है ना? So we use in preposition before the summer. India got freedom in 20th century. So here we use in preposition before the specific century. A specific century के 20th century की हम बात कर रहे हैं, we use in preposition. So now I hope you have understood the in preposition. Okay. Now let's start the on preposition. On, here we talk about a preposition of time. Here we use on is used for a day, date, etc. On किसके लिए use कर रहे हैं हम? Day के लिए और date के लिए हम use कर रहे हैं. Okay student. So now you notice that on किसके साथ use करेंगे हम? On plus day of week, Monday, Tuesday, Friday. हम जब भी week के हम days की बात करेंगे हम use करेंगे on. Okay, let's understand from the example. So first one is here, the party started on Monday. The meeting took place on Thursday. Here you notice that we talk about the किसकी बात कर रहे हैं हम? Week की बात कर रहे हैं. Day of the week as a Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. So before this day of the week we use on preposition. Okay, so another use of on preposition. On plus particular part of a day. On किसके लिए use आ रहा है? Particular part of a day as a Friday morning, Thursday evening, Monday afternoon. अभी तो हमने पढ़ाई था Monday Thursday के लिए, लेकिन अब आपको ये पता है कि particular हम Friday morning की, Thursday evening की बात करते हैं, afternoon की बात करते हैं. Here use on preposition. They reached Delhi on Sunday afternoon. Here you notice that you remember that we use on preposition before Sunday afternoon. Okay. Now our next, here we use on preposition as a before the festival days. On Christmas day as a festival day की बात करते हैं, जैसे on a Christmas day, on Diwali, on Sunday. For example, she was here on Diwali day. So Diwali की हम बात करते हैं, so we use on preposition before the festival day. Okay. In the next sentence, they came here on Christmas day. Here you notice that we use on preposition before the Christmas day. जब हम festivals की भी बात करते हैं, festival days की हम बात कर रहे हैं, तो we use a Diwali या Christmas day की बात करें, we use on preposition. So student, I hope you have understood the and, in or on preposition as a preposition of place. पहले हमने बात करी थी so preposition of place की बात करी थी, और फिर हमने बात करी है preposition of time की बात करी है. तो I hope you have understood. So let's start the exercise number 2 as a fill in the blanks with time preposition. अब हम time preposition as a use करेंगे. For example, he will meet me at 5 o'clock. जब हम as a particular time की बात करते हैं, we use at preposition. Now second sentence is here, he will come back from Bangalore on Monday. अब आपने नोटिस किया है, अभी हमने बात करी थी, जब हम Monday, Tuesday, weekday की बात करते हैं, we use on preposition. The third sentence, the meeting was held on 24th December. So you will notice that 24th December से पहले जब हमने बात करी, we use on preposition. Number 4 is here, the family gathered again at Christmas. When we talk about the festivals, जब हम festivals की हम बात करें, we use at preposition. And in the number 5th sentence, he goes to Shimla in summer. जब हमने आपको पता है seasons की बात करते हैं, तो हम कौन सा preposition use करते हैं? Yes, we use in preposition. Okay student, I hope you have understood the exercise number 2 as related to our time preposition. So
Student. Now let's start. The preposition third number position is here preposition of direction or movement. What is a preposition of direction movement? So let's start. So now the student, preposition of direction are used to show movement from one place to another. जब हम movement होती है हमारी एक जगह से दूसरी जगह तो हम क्या use करते हैं as a preposition of direction. Now these preposition are most often used with verbs of motion are found after verbs. कई बार जो preposition होती है जिसका जो movement होता है तो verbs of motion जो verbs के ऊपर depend करती है are found after verbs और verbs के बाद ये पाई जाती है. So let's start. For example, we went to London. So here we use towards for a preposition of direction. So we notice that as we talk about the movement and the direction, this letter to is used. This to talks about destination. Destination जो हमारा होता है उसके लिए हम क्या use करते हैं preposition to. Now, number second sentence, I am going dash London. So here we use as a towards. So where we use towards talk about direction. Towards किसके लिए बात करता है as a direction की हमें बताता है. So now another example of देखिए अभी तक हमने at in और के हमने uses पढ़े थे. अब जब हम बात करते हैं directions की movement की we use different types of prepositions. So for any here we talk about the direction and movement. We use the other uses of other example of over. So where we use over when something is vertically above another thing. कोई भी चीज किसी के ऊपर vertically मतलब सीधी straight है ना vertically है another thing. Yes, for example the sky is over our head. हमारे बिल्कुल सीधे straight ऊपर क्या है हमारे sky है. If we use all preposition okay here in this sentence. So now next is here from or to. Where we use from preposition? Yes, from is used with the point of departure. From किसके लिए use कर रहे हैं departure के लिए use कर रहे हैं and to is the end point of destination. जब हम जिस जगह हम पहुंच जाते हैं हमारा जो destination है तो हम क्या use करते हैं to preposition. So let's understand from the example. He went from Delhi to Patna. वो कहाँ से गया कहाँ से start हुआ point of departure कहाँ से departure हो रहा है Delhi से और कहाँ उसका destination कहाँ है पटना है. So here we use from Delhi to Patna. Okay. Next is here up and down. So here up indicates some movement to a higher position to somewhere. जब हम higher position जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं we use up preposition. And down indicates movement from a higher point to a lower point. जब हम ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं we use as a down preposition. Let's understand from the example. The girl ran up the stairs. So here you notice that up जब rain up मतलब कहाँ पर जा रही stairs पे ऊपर चढ़ रही है तो we use up preposition. The boy ran down the stairs. हमको ये notice हम इस sentence से हमको समझ में आ रहा है preposition समझ में आ रहा है तो boys क्या हो रहे हैं stairs से नीचे आ रहे हैं. So here you understand the up and down preposition. So this is the exercise related to this preposition of direction and motion. So now let's start. The boy climbed dash the slide. हम किसकी बात कर रहे हैं climbed up मतलब चढ़ रहे हो जो slide जो आपने देखा है ना slide पे जो आपके जो ये झूले होते हैं उसमें आप क्या करते हैं ऊपर चढ़ते हैं तो yes we use a upward position. We walk in the second sentence we walk dash the river. हम किसके लिए बात कर रहे हैं river की बात कर रहे हैं तो we walk towards the river. हमने बताया था मैंने आपको बताया था देखिए एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ. हम जब हम rivers की बात कर रहे हैं towards talk about डायरेक्शन जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं as a towards preposition. Direction we walk हम किस डायरेक्शन में गए as a river के डायरेक्शन we walk towards the river. Now number third is here we went dash Bikaner to Jaipur. So here you notice that जब हमको बात पता है जहाँ से हम डिपार्चर होते हैं और जहाँ पहुँचते हैं जो हमारा डेस्टिनेशन होता है वहाँ पर हम to यूज करते हैं और जहाँ हमारा डिपार्चर पॉइंट होता है वहाँ हम from यूज करते हैं. So here we notice that we went from Bikaner to Jaipur. Okay. So now next one is here he went dash the hill. वो कहाँ चढ़ रहा था हिल पर चला गया. Yes, here the second form of the verb as a go went gone. Yes, so here he went वो चला गया. Yes, up the hill मतलब ऊपर चढ़ा है. In the next sentence the ball rolled down the hill. जो ball थी rolled कहाँ से हो रही थी down the hill मतलब hill से नीचे गिर रही थी rolled हो रही थी. Okay student, I hope you have understood the preposition as up, towards, from, to and then down preposition. Okay, that's all about the preposition. So in this chapter in this video we will talk about the preposition of time, the preposition of place and preposition of a moment. Okay student, I hope you have understood
good. There's a preposition of. So students, please learn again, study again this chapter to understand where we use in, on, at, preposition as a place, as a place, as a preposition of place, as a preposition of time. Okay, and in the preposition of direction of movement, you notice that we use as a to, towards, up and down preposition. Okay student, I hope you have understood the what is a preposition and its different types of prepositions. Okay student, thank you.